बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वंस अगेन पैडागोजी से रिलेटेड यानी टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड कुछ MCQs जो कि एजुकेशन के पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टू शो। सिमुलेशन इज़ एन इलेबोरेट टाइप ऑफ। सिमुलेशन जो है वो इलेबोरेट टाइप है रोल प्ले की, गेमिंग की, सोशल ड्रामा की, और ये इन तमाम की ही एक इलेबोरेट टाइप है। सोलो टेक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, सोलो टेक्सोनॉमी को प्रेजेंट किया था बिग्स एंड कॉलिस ने। विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है इनमें से। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, तो इनमें से इंटरव्यू जो है वो साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है। टू आर मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन, दो या दो से ज़्यादा आस्पेक्ट जो है वो अंडरस्टूड किए जाते हैं इन मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। द डोमेन विच डील्स विद फिजिकल एबिलिटीज़ एंड कोऑर्डिनेशन ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन। ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान्स इज, यानी कि बड़े लेवल पे, दैट मीन्स 35 to 45 मिनट। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी जो है फिजिकल और मेंटल एक्शन दोनों को ही इन्वॉल्व करती है। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फोसिस जो है दैट इज टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। द रूल्स ऑफ presenting the contents to make them easy are called maxims of teaching, which is the second step in the problem solving method, that is formulation of hypothesis. The rules of presenting the contents to make them easy are called maxims of teaching. The fixation of correct information through repetition is caused by drill method. Herbert model for lesson planning has steps. इसके 5 steps हैं. In teaching, experienced members guide the immature ones for, experienced member जो है वो guide करते हैं for adjustment of life. Basic feature in lesson planning is that is objectives. The focus of cognitive domain is, cognitive domain का जो main focus है that is based on intellectual skills. System of the solo stands for, solo जो है वो किस चीज़ को stand करता है, that stands for structure of the observed learning outcome. नेक्स्ट इज इन प्रोग्राम्ड लर्निंग, लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर, लर्निंग जो है वो टेक्स प्लेस होती है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. द डीप कैटेगरी इन सोलो टेक्सोनॉमी consists of relation and extended abstract. With reference to solo taxonomy, one aspect of a task is understood in unistructural level. State first law of motion indicates comprehension. The name of heuristic method is derived from the Greek word that is heurizis. प्रैक्टिस इज़ मेड इन, प्रैक्टिस जो है वो मेड की यानी किस में की जाती है, दैट इज़ मेड इन ड्रिल मेथड. आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो एक्सपोनेंट था ह्यूरिस्टिक मेथड का. एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय अफेक्टिव डोमेन. सिंथेसिस रिक्वायर करती है फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चरल मटीरियल को. विच वन इज़ द बेस्ट फॉर लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ लेक्चर मेथड. The intellectual skills are reflected by cognitive domain. Lecture method is generally described as teacher-centered. The students will be able to translate a paragraph of English into Urdu. This objective fits in the category of cognitive domain, comprehensive में. According to Kilpatrick, the types of projects are, projects की types Kilpatrick के according 4 हैं. The surface category in solo taxonomy consists of 2 stages, which is not the focal point of triangular process of teaching, that is teaching method. Heuristic का मतलब होता है to investigate. Lesson plan makes the work organized, systematic and regular. A process in which a small group assembles to communicate with each other using speaking, listening and non-verbal processes in order to achieve instructional objectives is question answer method, which is not true about projects, that is it is teacher-centered activity. Micro teaching is a technique of teaching, that is a narrow and specific skill. Symposium is a type of, symposium जो है वो type है discussion method की. Inquiry means to investigate. 5 steps in problem solving method are 5. Portfolio is the collection of, portfolio जो है वो collection है student work की. A student performs a skill independently at the level of psychomotor domain is, that is articulation. First component of lesson planning is, that is objectives. Teaching is a form of interpersonal influence aimed at the changing the behavior potential of another is the view presented by, that is NL gauge, which is not the step of project method, that is analysis. T-Hing method based on the assumption of Herbert Spencer that the learner should be told as little as possible is heuristics method.
स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट जो है वो पैसिव होते हैं लेक्चर मेथड में। इंटीग्रेशन इज डिवेलप्ड बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स इन, दैट इज रिलेशनल लेवल। Integration is developed between two or more aspects in relational level and method based on Dewey's philosophy is, that is project method, जो कि Dewey की philosophy पे बेस करता है। Useful for higher classes is, that is lecture method. To go beyond the given information is, that is extended abstract level. It is a learning log of students' achievements, that is portfolio. The goal of teaching is, the goal जो है teaching का वो है, that is desirable change in behavior. Inquiry method includes, that includes questioning, answering. Who says that project is a purposeful activity, that is Kilpatrick. A repeated performance of learning act until attainment of desired level of skill to do the act correctly is, that is the drill method. An overall procedure which is adopted by a teacher, TC, achieve certain goals is, that is method. To achieve certain goals. We move from specific to general in, that is inductive method. The Socratic method is known as, that is known as question answer method. The last one is the method based on the psychological principle of trial and error is, that is heuristic method. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. और जो लोग चैनल न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।